Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, welcome to JIV CIV Prep. आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे. So, guys, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करने वाले हैं अराउंड our unit number 11, which is about the bank audits. Okay, so there are two units are remaining from my side. Actually, I missed those particular unit during the concept classes as well. So I'll come up with like back-to-back two session where we will be discussing concept as well as MCQs based on those particular unit, right? So these are the two units. ठीक है? So आने वाले session में I'll include operational aspect of accounting entries and back office functions. ये जो दो units हैं, ठीक है? So we will discuss these particular one with concept itself, right? तो बाकी आपका ऑलमोस्ट वी डन विद द ऑल सब्जेक्ट. सो आज हम लोगों का जो डिस्कशन होगा दैट इज अराउंड द बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस. ओके, अगेन this is a topic where from where you can get around 2 to 3 questions for like it can be for 1 marks or 2 marks. Okay, तो कैसे आपको इन 1 marks और 2 marks को secure करना है, so that we will be practicing in this particular session. So let's start the discussion. I hope आप सभी ने आपका concept class देख लिया होगा. ठीक है, so if you have gone through that particular one, so you will be able to answer these particular questions. कुछ नई learnings भी आपकी होगी यहाँ से. So initial question we will be practicing around the different type of audits which are generally part of banking system. Like we have statutory audit, forensic audit, management audit, concurrent audits. So these are the different type of audits. So इनके ऊपर सबसे पहले question practice करेंगे. Then we will come to the general guidelines and all, right? So the very first question, which of the following is the primary objective of conducting bank audit? So what is the purpose? Ki, like whatever the final accounts we are preparing, so these are aligned with the law, rules, regulations of RBI or the other act also, right? And we kind of will have some sort of transparency in our books. There is no malpractices. तो वो सारी चीजों को चेकअप करने के लिए we have this one. ठीक है? So to determine the profitability of bank, no. To ensure compliances with statutory and regulatory requirements, B will be correct answer for this particular one. Okay? So the primary objective of bank audit is to determine that bank is compiling with the statutory and regulatory requirements laid down by authorities such as RBI, Ministry of Finance or other regulatory bodies. While profitability and others, these are generally part of the they are generally outcome of that particular activities and all. For that we have profit and loss account और वी हैव बैलेंस शीट इक्वेशंस. ठीक है, तो उनके ऊपर आपका ये ऑडिट जो कि कंडक्ट किया जाता है कि जो रिपोर्ट हम लोग प्रेजेंट करें दे आर फेयर. ठीक है, वो सब कुछ आपका सही है. ठीक है, और कहीं ना कहीं देर इज नो माल प्रैक्टिसेस, किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी आपका नहीं हो रही है. ठीक है, which of the following is most appropriate method for auditors to assess the adequacy of bank provision for non-performing asset? Again, so for like I hope everybody is aware about the provisioning rules. Okay? So against the NPAs we have to create provisions. Okay? Even for standard asset as well. Okay? NPA के against में like for standard asset. Okay? I'll quickly mention here. Okay? So we have three categories: standard asset. So where we have for secured asset 15% and for unsecured it is 25% plus 10%, right? In case of your doubtful asset, okay, so doubtful asset, the category we have three categories: doubtful 1, doubtful 2 and doubtful 3. Okay? And the overall provisioning for secured, this is secured. Okay? So this is for the secured one. Okay? So it is 25%, then a doubtful 2 it is 40% and doubtful 3 it is 100%. ठीक है, so अगर वो unsecured है so that will be 100% anyhow, right? In case of loss asset, the third category loss asset, ठीक है, so it is 100%. ठीक है, so loss asset basically उनको written off किया जाता है. ठीक है, for any purpose if we are keeping loss asset in our books, so we have to make a provision of 100%. Now अब बैंक आपका ये जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है इवन फॉर स्टैंडर्ड एसेट एज वेल वी हैव अ रेंज ऑफ 0.25% टू 0.75%. ठीक है, तो उसका भी आपका जो ओवरऑल प्रोविजनिंग है, ठीक है, पीपीवी में हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो comparing the bank NPA with the industry average, no, this is not the motive. Reviewing the internal audit report and ensuring provision in line with the regulatory compliances
and this is the compliance. ठीक है, basically अगर हम NPA के reference में बात करते हैं, so the adequacy of the provisions for NPA should be assessed by the auditors through the detailed review of the bank internal audit report. The auditor will check if the provision made for NPA are accordance with the guidelines of RBI and whether they are sufficient to cover the potential losses from the bad loans. Understood? Next one. When conducting a bank inspections, what is the primary focus of verifying adequacy of the bank internal control? So adequacy of bank internal control, the bank ability to generate profit, no. So it is something related to bank inspections. So inspections is like RBI can conduct inspections as per section 35 of Banking Regulation Act 1949. Okay? I'll summarize these particular one. So BR Act 1949. ठीक है? तो Banking Regulation Act 1949 के वहाँ पे जहाँ पे RBI को right दिया गया, तो they can conduct inspections in any bank. So to check, like it can be on the entire bank or a specific section. ठीक है, तो ये कंडक्ट करने का जो पीछे ऑब्जेक्टिव है, द एफिशिएंसी एंड इंटीग्रेसी ऑफ अकाउंटिंग system and report, it can be, ठीक है, the speed at with loans, no, the bank success of meeting this, ठीक है. So what will be our correct answer for this one? B will be right answer for this one, ठीक है. The primary focus of inspections of the internal control is to verify efficiency and integrity of the bank accounting system and reporting process. This ensure that financial system are accurate, financial statement are accurate, and that the bank adhere to all the internal policies and regulatory standard. Auditor will look for weakness that could expose the bank to operational risk or any kind of fraud. Okay, next one. In bank audit, which of the following procedure is most effective for determining fraudulent transactions? तो किसी भी प्रकार की जो fraud transactions है उनको find out करने के लिए कौन सा audit suitable होगा या कौन सा action, ठीक है. So comparing bank balance at the beginning and end, no, this is not going to help, ठीक है. Reviewing a sample of high value transaction and ensuring proper documentation, it can be, ठीक है. Checking of bank profit growth, no. Verifying the bank credit rating, no, ठीक है. So what will be your correct answer? Reviewing the sample of high value transaction, जैसे आपका 2013 as per RBI circulars, ठीक है. So if you have given loan worth rupees 5 crore rupees and more, ठीक है, so you have to conduct regular audit on these particular activities, ठीक है. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स आपकी हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं फोकस करते हुए आपका कर सकते हैं, ठीक है. और ensuring a proper documentation, that is KYC, और to avoid any kind of AML activities, ठीक है. So एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्टिविटीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए. So fraud and transaction can often be detected through the detailed review of high value transaction and ensuring that all transactions have the necessary supporting documentations, approvals, contracts, customer confirmations. Auditors often perform forensic audit to identify fraud by looking for inconsistencies or pattern that suggest a fraudulent activity. जैसे 49,000 की बार बार transactions हो रही हैं या 10. Even there was one case from Tamil Nadu ना, so one of you only, एक banker आपका था जो like there are some cyber people and all, they were basically forcing that person senior citizen कि आप इतना ट्रांसफर कीजिए and all, ठीक है. So ऐसी जो मतलब कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसी एक्टिविटी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन या अदर्स, दैट इज जनरली पार्ट ऑफ दिस. What is the importance of performing a concurrent audit? So what is concurrent audit? अगर आपको याद होगा, so you will be able to answer this particular one. Concurrent audit is basically it's a regular audit on our day-to-day transaction. Let's say what we do like 10 to 4 p.m. is our banking hours with the public dealings. After that, we generally reconcile the entire day's transaction and all. So what you are doing kind of concurrent audit on the day-to-day transaction and all. Okay? So to verify all the bank asset have been properly valued, to provide real-time assurance that the bank financial transactions are conducted in compliance with the internal and regulatory requirements. Okay? So this option will be correct answer for this one. Okay? So a concurrent audit is performed on a continuous real-time basis to ensure that all financial transactions conducted by the bank are compliant with the bank internal policies
and regulatory guidelines. This type of audit help identify issue as they arise rather than after the fact, enabling prompt corrective actions. ठीक है, जैसे हमने ट्रांजेक्शन किया उसके साथ साथ उसका वेरिफिकेशन किया है, all right. Which of the following audit is conducted to examine the efficiency of bank operational performances including the effectiveness of internal control? तो कौन सा ऑडिट होता है? मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है, सो इट इज पार्ट ऑफ दिस. यस, सो मैनेजमेंट ऑडिट आपका कि हाउ इफेक्टिवली हाउ यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज, हाउ what is the efficacy and all. ठीक है, so management audit focus on evaluating the efficiency and effectiveness of bank operations, including the internal control, governance structure, and management processes. It aims at assessing how well the bank resources are being utilized to achieve the organizational goal. Unlike statutory audit and primary checks, financial records, a management audit look at overall organizational performance. So it's a kind of a bigger one. ठीक है, जिसको scope wise आपका. ठीक है, तो how optimally we are using our resources, that is kind of your management, that is generally known as management audit. Ki let's say to perform a job we require 2% and the branch has assigned 5%, so that is there is some inefficiencies. तो ऐसी चीजों को correction जो इसके through आपका देखने के लिए मिलेगा. Which of the following is primary focus of forensic audit? So forensic audit, it is basically in case of, like, let's say if there is a customer or there is a company who become insolvent, ठीक है, or that particular asset become non-performing asset, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं विल बी रिक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस कि जब हम उसके अगेंस्ट में केस करेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे. सो लाइक while we do the forensic audit, we generally collect these kind of reports. So that collection in all, that is generally known as forensic audit. Okay? To ensure compliances with tax laws, no. To evaluate bank financial performance, no. To investigate potential fraud or financial misconduct, it can be. ठीक है, तो ऐसे जो भी आपका कि कहाँ पे चांसेस हैं, they are also part of this one. ठीक है, to assess the overall effectiveness, no. ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट ऑडिट. So C will be correct answer for this one. ठीक है, so forensic audit is a primary focus on investigating financial fraud, misappropriation of asset, financial misconduct, or any irregular activities that could lead to the financial losses or legal issues. In the context of banking, forensic audit are used to uncover fraudulent transactions or financial scheme, often involving the detailed examination of record, transaction and all, and we use those particular report in the cases itself, right? Next one. In the context of bank audit, what is the primary objective of statutory audit? ठीक है, statutory means आपका जैसे आरबीआई की जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो ऑडिट्स आपके ऊपर होने हैं, ठीक है, लीगल आपका जो कंप्लाइंसेस हैं कि these are the legal compliances, are your bank is following those particular one clearly, yes or no, ठीक है, उनका फाइंड आउट होगा. ठीक है, तो आरबीआई, वी हैव लॉट्स ऑफ गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई. So are these bank or are that particular bank जिसके ऊपर भी statutory audit हो रहा है, they are meeting with those particular compliances, yes or no, that is the one. ठीक है, to ensure that bank is following its internal policies and operation, to this is internal audit. To verify that bank financial statement are true and fair, compiled with the regulatory requirement, yes. To identify potential fraud and corruption in the bank, it is part of forensic. To assess the bank employee performance and efficiency, again management audit. ठीक है, so B will be right answer for this one. ठीक है, statutory audit is a mandatory under the law and it is conducted by an external auditor to verify that bank financial statements are accurate, complete and compliant with applicable accounting standards and regulatory requirements. ठीक है, it ensure that the bank financial position is fairly represented and that the accounts are in compliance with the legal frameworks. Next one. The account and balance sheet are prepared under section 29 of the Banking Regulation Act 1949 along with the audited reports have to be published in newspaper within a period of how many a day, month. So it is month, that means 2 months. ठीक है, sorry 6 month आपका, sorry 6 month, ठीक है, 180 days from the end of the period to which the account and balance sheet is released. ठीक है, so what will be your correct answer? 6 month will be right answer
for this particular one. Okay, now we will have a discussion here. Just first have a look. Okay, so there are few things which you need to recommend. Sorry, remember. Okay, कुछ चीजें ना जो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है, these are first of all, banking company in India, they have to prepare their final accounts as per Banking Regulation Act 1949. ठीक है, and the section is section 29. ठीक है, so banking companies in India, they have to prepare their final accounts as per section 29 of Banking Regulation Act 1949. As per this section, there are two like predefined form which are generally provided by RBI. One is that is generally known as Form A, Performa balance sheet. It is something related to balance sheet. Balance sheet where we have 12 schedule. Where we have 12 schedule. Form B where we have which is something related to profit and loss account. So and here we have 6 schedules. So in overall total we have 18 schedule, including note to accounts. ठीक है, तो कोई भी बैंकिंग कंपनी इंडिया में है जो बैंकिंग का बिजनेस रन कर रहा है, so they have to prepare their final accounts in accordance with section 29 of Banking Regulation Act 1949. ठीक है, तो इसका फॉर्मेट आपका that is given by the RBI itself, and you have to prepare your final accounts in accordance with this particular format. तो वहां पे शेड्यूल आपके दिए गए जैसे 1 to 12 फॉर बैलेंस शीट, आपका 6 to 18, इन 18 वन इज इन नोट टू अकाउंट्स. मॉड्यूल बी के अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट में हमने इसको डिस्कस किया. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम अदर सेक्शन आल्सो, लाइक section 30 subsection 1, then we have section 30 subsection 1 subsection B. So this is related to audit. ठीक है, so audit, this is related to special audit conducted by RBI. ठीक है, so ये आपका रहेगा. ठीक है, so like that means जो यहाँ पे आपका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं उसके ऊपर आपका जो ऑडिट होगा दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद दिस. स्पेशल ऑडिट अगर कंडक्ट किया जाएगा सो दैट विल बी अकॉर्डिंग्स टू दिस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज, लाइक इफ देयर इज इसके बाद आपका सेक्शन 31 एंड 32, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू जो हमारा क्वेश्चन था. ठीक है, सो रिपोर्टिंग टू आरबीआई, इफ इट इज अबाउट द रिपोर्ट टू आरबीआई. ठीक है, सो रिपोर्ट टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो इट इज विद इन 90 days. ठीक है, 90 days मीन्स 3 months आपका. ठीक है, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका रिपोर्ट टू, इफ इट इज लाइक रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर. ठीक है, सो वहां का जहां पे भी आपका हेड ऑफिस है, एटलीस्ट वहां के जो बड़े फाइनेंशियल जार्गन से उनमें. ठीक है, विद इन 180 days. बहुत बार ये पूछा जाता है टाइम ड्यूरेशन आपका. ठीक है, जिसको आपको याद रखना है. रजिस्ट्रार ऑफिस आपका 3 month ओनली. ठीक है, आरबीआई वाला. ठीक है, इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव section 35 which is related to inspections. ठीक है, so inspections. और इसके बाद आपका आता है section 38 which is related to वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी. ठीक है, सो वाइंडिंग अप. ठीक है, तो अगर जैसे इंस्पेक्शन होगा ये आरबीआई खुद भी कंडक्ट कर सकता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे करवा सकता है. अगर वो बैंक आपका कहीं ना कहीं बिजनेस करने के कंडीशन में नहीं है, so we can have like RBI or government of India, they can take two major step. One is like they can hold कि you cannot take except deposit for next 3 months or this much days and all. ठीक है, और एल्स अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो हम आपका वाइंडिंग अप प्रोसेस में जा सकते हैं, बट बिफोर दैट वी विल हियर द बैंक इटसेल्फ. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है, सो द अकाउंट्स, now we'll discuss this. The account and balance sheet is prepared under section 29 of Banking Regulation Act along with the auditor's report. So basically it is 3 copies of balance sheet, 3 copies of profit and loss accounts along with the auditor's report. So you have to submit with RBI within 3 months. But newspaper, if it is about the newspaper, so you have to publish within 6 months or which is 180 days. ठीक है, so this is the one. ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है. Next one. Which of the following statement is correct with regard to the banking company submission of balance sheet and profit and loss account? So now we know the answer. So accounts will be prepared as per section 29 and audit will be conducted as per section 30. Then you have to, as per 31, you have to submit with RBI within 3 months
or 90 days from the closure of the accounting period. ठीक है, 3 copies of balance sheet, 3 copies of profit and loss account along with auditor's report. ठीक है, so 2 copies no, 3 copies balance sheet and profit and loss account within 3 months from the end of the accounting period. Please ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, so the balance sheet and profit and loss account have to be prepared in the format set out in the third schedule. जैसे अभी हमने बात किया सेक्शन 29, बैंकिंग कंपनी हैज टू सबमिट 3 कॉपीज ऑफ इट्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स along with auditor's report within 3 months from the end of the accounting period. This may be extended by RBI by a further period not exceeding 3 months. अगर इसको बढ़ाएंगे भी तो मैक्सिमम कितने समय के लिए आपका, और 3 महीने का. यूजुअली इतना डिले आपका इंडिया में होता नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वन. The balance sheet and profit and loss account of a banking company has to be audited as stipulated under section, which section of the Banking Regulation Act? तो क्या होगा आपका सेक्शन 30 सबसेक्शन 1. इफ इट इज स्पेशल ऑडिट सो दैट विल बी एज पर सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी आपका. ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखेंगे इसको. द अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 29. The balance sheet and profit and loss account of a banking company have to be audited as stipulated under section 30 of BR Act this. ठीक है, ऑडिटर कोई भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन. RBI is empowered under section dash of the RBI Act 1949 to order special audit of a banking company. तो special audit किसमें होता है? सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B. ठीक है, तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? D will be right answer for this particular question. ठीक है, so RBI is empowered under section 30 subsection 1 subsection B of the banking company Banking Regulation Act 1949 to order a special audit of a bank accounts of banking company. Such an order may be passed when RBI of the opinion that special audit is necessary. ठीक है, not social, it is special audit. ठीक है, special audit is unnecessary in the public interest or in the interest of banking company or depositors. ठीक है, an order on special audit may relate to any transaction or a class of transaction or such period or period as the RBI may specify in the order. The expense in relation to the special audit will be borne by the banking company. ठीक है, तो इसमें जो खर्चा आएगा वो भी आपका बैंक ही उठाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. अंडर विच सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सबमिट रिटन ऑफ इट्स लिक्विड एसेट? सो इट इज पार्ट ऑफ, एक्चुअली ये हमारा जब बैलेंस शीट इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे आएगा. बैंक फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 जो इसके संबंध में आपका डील करता है. ठीक है, ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं था एक्चुअली. ठीक है, बट नो वरीज. Section 35 of the Banking Regulation Act, which deal with the bank inspections. ठीक है, हमने starting में discuss किया. The RBI is empowered under Section 35 of Banking Regulation Act to conduct inspection on a banking company. The central government may also direct the RBI to conduct inspections of bank, and in that case, RBI is bound to comply with the such direction. The inspection officer is authorized to examine the director or officer of the banking company itself. ठीक है, so now what can be the repercussions of this inspections? ठीक है, वो अगर होता है उसके outcomes पे क्या क्या decision हो सकते हैं, that is the question. The central government of the opinion that the affair of a banking company are being conducted to the determinant of the interest of the depositors. The government may take action like prohibit the banking company for receiving fresh deposit through direct RBI to apply winding up of banking company under section 38 of RBI. तो both are correct. ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक्शन आपका लिया जा सकता है. बट बिफोर दिस we will, after that inspection report, so we will send a notice to bank, then some bank representative they'll come to us, and us means RBI here. ठीक है, तो वो आपका अपना पक्ष रखेंगे. इफ वी आर सेटिस्फाइड देन वी विल गिव देम टाइम. इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड देन वी कैन टेक दीज टू एक्शन. ठीक है, आरबीआई और गवर्नमेंट दे कैन हैव दीज टू एक्शंस ऑन दैट पर्टिकुलर बैंक. ठीक है, so central government may also direct the RBI to conduct inspections on any bank, and in that case RBI is bound to comply with this one. ठीक है, and they can take these particular directions. ठीक है, next one. Which of the following statement is are incorrect with regard to the
बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है। सो बीएफएस के बारे में आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट, ठीक है। तो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर, ठीक है। सो जहां पे हम लोग आपका कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी हो रही हैं ओवरऑल सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उनके ऊपर आपका रिपोर्ट्स, ठीक है, एंड हाउ वी आर डीलिंग विद दोस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो इट गेट स्टार्टेड इन 1994 इटसेल्फ, ठीक है। 1994 में ये आपका आया था। So Board of Financial Supervision is a committee established under Regulation 4 of RBI, Board for Financial Supervision Regulation 1994. These regulations were framed by the RBI under Section 58 of RBI Act 1934. True. The governor of RBI is the chairman of this. ठीक है. The board meet at least once in a month. This is also true. कौन सा गलत है इसमें फिर? द बोर्ड ऑफ ओके ओके, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। दिस इज लाइक दे हैव रॉन्गली मेंशन दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1994, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन बिकॉज दिस ईयर इज मेंशन रॉन्ग, ठीक है। ये आपका 1994 में बना था, ठीक है। सो दिस, ठीक है। सो सेक्शन 4 ऑफ द आरबीआई Board of Financial Supervision Regulation. These regulations were framed by RBI under Section 58 of the RBI Act 1934. The governor of RBI is the chairman of this particular board, and deputy governors of RBI and one deputy governor shall be nominated by governor as a full-time vice chairman of this. So they generally meet at least once in a month, which is also true. The board perform the function and exercise the power of supervision and inspections under the RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949 in relation to different sectors of the financial system including banking companies, ठीक है। तो overall audits in all, ठीक है। Next one, the power, function and duties of the auditors of a banking company are defined under which of the following act of companies, which of the following section of companies है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर आप बात करेंगे बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर का, तो बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर कौन हो सकता है? जो किसी नॉर्मल कंपनी का भी ऑडिटर है, ठीक है। मतलब बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर होने के लिए कोई एडिशनल आपके रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट बिफोर अपॉइंटिंग, बिफोर रीअपॉइंटिंग और बिफोर टर्मिनेशन, बैंक दे नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई कि हमारा ऑडिटर, हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रीअपॉइंट कर रहे हैं या उसको हम हटा रहे हैं, तो हर केस में यू हैव टू टेक अप्रूवल और यू हैव टू मेक अवेयर आरबीआई अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है। तो ये आपका जरूरी है। अब ये जो ऑडिटर्स होते हैं ना, वो किसी नॉर्मल कंपनी को यहाँ पे हो तो उनका जो सिलेक्शन होता है दैट इज एज पर सेक्शन 227, ठीक है। सो सेक्शन 227 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे ऑडिटर्स की पावर, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंटमेंट्स, वो सारी चीजें आपकी बोली गई, और वही आपका बैंकिंग कंपनी का भी हो सकता है। द पावर, फंक्शन, ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटीज एंड द लाइबिलिटीज टू ऑडिटर्स of banking companies are defined under section 227 of companies act, are applicable to give certain additional information in his audit report, such as any matter which the auditor consider necessary to bring to the notice of the shareholders of that particular company. Next one, guys, which chapter of RBI Act 1934 deal with the penalty for वायलेशन ऑफ एक्ट? तो कौन सा चैप्टर आपका? चैप्टर 5, ठीक है। जहां पे ये सारे आपका, जैसे लाइक इफ देयर इज अ बैंक और हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक और बोर्ड, they are doing some sort of malpractices in their final accounts, auditor is intentionally or unintentionally approving that particular one, these kind of activities and all, ठीक है। तो उसके लिए 3 साल की सजा, ठीक है। there is a 3 year life imprisonment और आपका monetary penalties also, right? So a banking company has to abide by the requirement of RBI Act and BR Act and the subordinate legislation, and failure to do so invites the penalties. Chapter 5 of the RBI Act 1934 deal with the penalty for violation of act. Banking company have to make application and furnish written statements एक्सेट्रा अंडर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस, ठीक है। जैसे आपको अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट एंड ऑल, तो उनको बनाते समय आप किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना करें। वो मतलब अगर अनइंटेंशनल होगा ना तो भी आपका, अगर प्रूफ में अनइंटेंशनल गलती भी आएगी, स्टिल देयर इज अ पेनल्टी फॉर दैट वन, ठीक है। द मेकिंग ऑफ एनी स्टेटमेंट और रिपोर्ट विच प्रेजेंट फॉल्सिफाइड डेटा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, is a punishable offense with imprisonment up to 3 years
as well as monetary charges. ठीक है, next one. The balance sheet and profit and loss account of a banking company has to be audited as stipulated under section 30. We already discussed this question. ठीक है, this also we have discussed. ठीक है, both are correct. Sorry. Okay, this is it. ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 11, ठीक है, जहां पे आपका बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, छोटा सा यूनिट है, आपके हाफ मार्क्स के मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, वो टाइप ऑफ ऑडिट के बारे में अगर 3-4 ऑडिट को मिक्स करके वो पूछेगा, देन ओनली इट विल गो फॉर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। अदरवाइज जो ऑन एन एवरेज वेटेज इस पर्टिकुलर यूनिट का, दैट इज 1 मार्क्स एंड 1.5 मार्क्स, या 1 नंबर या 1.5 नंबर तक के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली आपका क्वेश्चन क्या होते हैं, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो भी देखा होगा तो वहां से आसानी से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप गाइस, आप यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और एनी डाउट एंड ऑल, सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड ऑल। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू शेयर दिस सेशन विद योर friends also, so they can also take advantages of these one. ठीक है, from next week onwards we will be starting like regular session for IE and IFS also. ठीक है, तो जैसे हम लोग AFM का मॉड्यूल ए पूरा हो जाएगा इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक में आपका IE and IFS we will start with the most important module, मॉड्यूल डी, क्योंकि वहाँ पे 17 यूनिट्स हैं। अगेन सेम फॉर्मेट, यूनिट वाइज MCQs एंड केसेस, तो आप कहीं पे भी लैग ना करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑलरेडी उसकी प्रोवाइड कर दी गई हैं, so please do watch those particular one before we end up we start with that particular thing. ठीक है, तो D एटलीस्ट आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मॉड्यूल वो आपका बड़ा भी रहेगा, अराउंड 9 आवर वीडियो इज देयर। ठीक है, तो आप उसको आपका एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय, टेक केयर ऑल, सी यू टुमारो, थैंक यू।